Good afternoon. Sorry for the delay. Welcome you all for the class and good afternoon to one and all. Okay, so yesterday we discussed about um, the chapter probability, the basics of it, and today we'll see the important example which comes in the exam for that. Okay, so let's begin. So as you know, probability is like game of chance. You can say like we talk about the probable or prediction, right? And we use the formula here as probability of event E. How do you read this word as probability of event E as number of favorable outcomes to total number of outcomes. And just a recap of yesterday's class, we discussed about few terminologies over there, like at least and at most. So I hope you're very clear with that. And when it comes to apply the concept, be very careful about it. Okay, so let's begin with our first question. Okay, that is which is totally bit different from your stats and which we generally do it. So the question says you have to find the probability of imagine that you and your friend, okay, you both are talking about birthdays, okay, and here the chance or the question comes that what is the probability that you both have your birthday on the same day, right, on the same day. So what would be, I hope you got the question, that what is the probability that you and your friend have the birthday on the same day. Okay, so you know that birthday comes as once in a year, and once in a year means when we convert it in terms of days. How many days are there? Yes. So total outcomes for you, what is it? 365. And here in this case, we don't consider the leap year unless it is specified to you that it is a leap year. Okay. So we take it for granted that we are talking about a general year. So we get that total outcomes as 365. And naturally the birthday comes once in a year. So one day would be same for both of us or both of you and your friend. So favorable outcomes is any one day of this 365. It could be any one, right? So probability of birthday on the same day as per the formula, it is 1 on 365. Okay, these are all typical examples which I'll be dealing with you today. So I hope this is clear to you, right? So birthday on the same day, any two person, maybe A and B is given or some names are given. You have to remember this. When you talk about the birthday on the same day, it is out of 365 days, only one day. So we have birthday on the same day, the probability is 1 on 365. I hope it is clear. A very simple question or the concept to understand. Okay. So the reverse of it or the opposite of it or statistically complement of it. What is it? The birthday is not in the same day. Not on the same day. I hope you got this. So may I say these two are complement of each other, right? So if your birthday comes on the same day, then definitely it cannot be on the different day, right? And if the birthday is not on the same day, that means it has to be on the same day. Either not on the same day means it has to be a different day. I hope that is understood to you. So either you can do it as 1 minus, I told you that sum of the complementary event is always 1. So probability of this will be 1 minus 1 upon 365. So you get this as 365 minus 1 upon 365. That is 364 upon
on 361, right? So either you use the concept of complement and do it, or directly also you can understand. Since one day, one person's birthday, suppose my birthday is on one of the days, so and we are talking about your birthday, so definitely the second person's birthday will not be on that day. So you have to exclude out of 365 days, you have to exclude that one day. Okay, so how many days are left for your birthday option out of 364? Any one day, isn't it? So directly also you could write the 364 upon 365. I'll send you, I would send you, I'm going with slow so that you understand and you don't ask the question. I would be sending you the notes for this. So right now you try to understand, don't go on writing, please. Okay, everyone please try to pay attention. सिर्फ समझ लीजिए, यहाँ पे डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देना. Okay, so I hope this is clear to you. Okay, now we go ahead with next question. शायद मैंने पता नहीं ये क्लास 9 में भी करवाया हो. This question comes in, 10th, 11th also this is the question, and generally मैं 9th में भी जब probability होता है तो करवाती हूँ. If you remember, so what is the probability of having 53 Mondays in a year? दूसरी पॉसिबिलिटी इन अ लीप ईयर. ठीक है, मैंने दो क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और सब क्वेश्चन उसके साथ में है. Okay, so we discussed here what the question. I hope it is clear. What is the probability of having 53 Mondays in a year in a leap year? If you know it well, good. Otherwise, let's begin. Please have patience and stop commenting. And here, so this is the formula. Make the habit that as soon as you understand the question and you start with it, you write down the formula. Fine. So what are the total outcomes here? Now this question is bit different from others because here your total outcomes is totally different, right? So how? Let's see. Now everyone knows, when you're class 4, you must have studied about the calendar, right? So you know that first we talk about general year, a non-leap year. Okay, so non-leap year means how many days are there in a non-leap year? 365 days. Okay, and how many weeks are there? That's the question to you. How many weeks are there in a year? You know that in a month, about 4 weeks are there, and then 2 extra. Okay, so that way, if I go ahead, and 1 week means 7 days. 7 दिन होते हैं ना 1 week में. So 1 week, 7 days. So if I go on repeating the 7, 7, 7, 7, it goes on. Look here, 52 multiplied by 7 is equal to 364. Okay, so 365 days को मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे 52 weeks यानी कि ये 364 और ये एक दिन अकेला बच जाएगा. I hope this is clear to you. जो मैंने बताया उतना ही, और कुछ नहीं समझा तो ठीक है. 52 7 364. So and एक दिन बचा. अब हमारा फोकस ये एक दिन पे है. तो 52 weeks का मतलब क्या हुआ कि 52 बार संडे आ गया, 52 बार मंडे आ गया, 52 बार ईच डे. All 7 days will come 52 times. आपने बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़े होंगे ना कि ये कॉम्बिनेशन सालों के बाद आता है ऑल दीस थिंग्स. सो मैक्सिमम टाइम्स इट्स ऑल रबिश because you know that logically 52 weeks है तो हर दिन 52 times आना ही आना है. अब बचा जो लास्ट डे आपका है, तो ये जो लास्ट डे आपका है ये कौन सा होगा? क्या ये संडे होगा, या ये मंडे होगा, या ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे? कितने ऑप्शन है मेरे पास? 7. Isn't it? Because 7 days में से कोई भी एक हो सकता है. And that is why our total outcome is, starting with a shortcut please, either it is Sunday, or it is Monday, or it is Tuesday, or it is Wednesday, or it is Thursday, or it is Friday, or it is Saturday. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So number of total outcomes कितने हो गए आपके? Understood? ध्यान आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ?
हमें पूछा है कि एक साल में मंडे कितनी बार 53 टाइम्स आएगा, तो हमें पता है कि 52 टाइम्स तो आने ही वाला है। ओके, तो जो आपका लास्ट डे ऑफ द ईयर है, जब आप 364 डेज खत्म कर रहे हो, तो उस 364 डेज में ओके मंडे से लेकर सारे सातों के सातों दिन 52 टाइम्स आ चुके हैं, तो यू लेफ्ट विद दैट वन डे का ऑप्शन। और इसीलिए यहाँ पे ईयर वाला क्वेश्चन है, फिर भी आपके टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं, 7। ओके, एंड व्हिच इज द फेवरेबल आउटकम, इसमें मंडे होने के कितने चांस है, 1। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या है यहाँ पे, आई होप ये भी आपको क्लियर होता जा रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा टोटल आउटकम्स, तो मैं उसको लिस्टिंग कर रही हूँ, और जब नंबर कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ। ओके, सो मेक द हैबिट दैट यू राइट द थिंग्स परफेक्टली। आई नो जनरली इस क्वेश्चन में होता है कि यू नो प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं रखते हैं, राइट, करेक्ट आंसर। But the thing is, suppose by chance you go wrong with some, you know, something happens in the examination, but with your presentation everything correct, then you get the half mark at least, okay, for that particular thing. So favorable outcomes हुआ, तो उसका number of favorable outcomes कितना हो गया हमारा, I'm just writing shortcut. So 1, enhance probability of 53 Mondays will be out of 7, there is only one possibility, that is 1 on 7. I hope this is clear to you. और अब इसी क्वेश्चन को आपको हर तरीके से पूछा जा सकता है, you know, like they can change any day with the probability of having 53 Sundays or 53 Mondays or 53 Tuesdays, कोई भी हो, आपको same method follow करनी है। I hope this is clear to all of you. Yes, just give me the thumbs up so that I could understand. You know, no need to write yes, no, what is it, and just give me, you know, that thumbs up sign, so I do understand that you understood. Okay, and then we move on to the leap year. Yes, children, shall I go on further with this? So now, when it comes to leap year में क्या होता है? Yes, leap year में क्या होता है? एक दिन extra, right? One day extra होना है, because you know that February में 29 days हो जाता है. So we have total number of days as क्या होगा यहाँ पे? 366 हो गए, तो यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 2 दिन, मतलब कि 52 टाइम्स संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे 7 के 7 32 टाइम्स, आई मीन सॉरी 52 टाइम्स आ गए। ओके, सो नाउ वी हैव टू लुक फॉर आवर टोटल आउटकम। थोड़ा सा ही अलग है यहाँ पे, बट आई थिंक ये बहुत बच्चों को मतलब दे जस्ट रिमेंबर अगर यू नो शॉर्टर वन, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं? ओके, 2 दिन वीक में आपको लेने हैं, तो कौन सा लेंगे? या तो आप लेंगे संडे मंडे, संडे मंडे वाली पेन होगी, या तो मंडे ट्यूसडे वाला होगा, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं है ना कि संडे के बाद डायरेक्ट ट्यूसडे आ गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे थर्सडे आ गया, या तो थर्सडे फ्राइडे आ गया, या तो फ्राइडे सैटरडे आ गया, और या तो लास्ट ऑप्शन हमारा सैटरडे संडे आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है। जस्ट इमेजिन, जैसे मैं बता रही हूँ कि 29 दिसंबर है आज, और 29 दिसंबर है, सपोज आज संडे है, तो 29 दिसंबर को संडे है, तो लास्ट 2 डेज कौन से हो गए आपके, मंडे ट्यूसडे। यदि आज मंडे है तो नेक्स्ट 31st को क्या होगा आपका, ट्यूसडे वेडनेसडे, isn't it? कोई स्किप तो नहीं कर देगा कहीं भी संडे के बाद इस बार ट्यूसडे आ रहा है, नो नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपके ये कॉम्बिनेशन हो गए संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, हमें चाहिए मंडे 53 मंडे वाला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके फिर से आ गए हैं, 7 ही हो रहे हैं, ये कॉम्बो भी आपके कितने हो रहे हैं, 7 ही हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब आपका फेवरेबल आउटकम देखते हैं। ओके, आपको क्या चाहिए, मंडे चाहिए, तो मंडे कहाँ का आ रहा है, संडे मंडे में भी मंडे आ रहा है, और मंडे ट्यूसडे में भी मंडे आ रहा है, isn't it? मतलब कि सपोज 29 दिसंबर को संडे है, राइट, तो आपका 30 और 31st हुआ मंडे ट्यूसडे, और सपोज 29 दिसंबर को आ रहा है सैटरडे, तो क्या हुआ, नेक्स्ट 2 डेज 30 और 31st संडे या मंडे, तो संडे एंड मंडे, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 पॉसिबिलिटी में हमेशा मंडे तो आ ही रहा है। ओके, तो आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं, कितने हुए, 2। सो
now what is the probability of 53 Mondays? It is out of 72. Hope it's clear. Yes, एकदम डिफरेंट सम है, एकदम जो टिपिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जाती है उससे पूरा 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 अलग सम है, राइट? तो इसीलिए मैं सबको ये मतलब यू कैन जस्ट यू नो आई डोंट नो इट्स अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई रखने वाली चीज तो नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये 52 वीक्स का, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं तो यदि आप 365 लेके करोगे डेफिनेटली यू विल बी रॉन्ग, देयर इज नो वे दैट यू गेट द करेक्ट आंसर. फाइन, इट्स क्लियर. So let's move on to the other question. Okay, और अब इसमें मैं जा रही हूँ dice question पे. Let's go with simple dice questions which maybe I think few questions we have solved it in class 9 also. Okay, तो अब हम ले रहे हैं simple a single die question. ठीक है, एक simple एक die हमने थ्रो की, तो हमारे total outcomes क्या आ रहे हैं? It could be 1, it could be 2, it could be 3 or 4 or 5 or 6, isn't it? Total outcomes आपके आ रहे हैं, ठीक है? So number is 6. Okay, अब मैंने die throw की, ठीक है? तो मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. इवन नंबर कौन कौन सा है? ओके, 3. तो आपके फेवरेबल आउटकम्स यहाँ कितने हो रहे हैं? फेवरेबल आउटकम्स आपके हो रहे हैं 2, 4, 6. देखिए मैंने बहुत सिंपल वाला लिया है, और इसके आगे का फिर आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो रहे हैं? 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हुई? 3 on 6. So take the answer here, cancel it and write it. Yes, you are right. Okay. What is the probability of prime number? चलिए, आपने डाई थ्रो की, और what is the probability that you get a prime number? Yes, that's the answer. So the prime numbers listing, so आपका favorable outcomes हो जाएगा. Yes. What? Okay. What is the probability that you get a prime number on your dice? I was expecting that. Okay. So what are the prime numbers? Could you answer me? What are the prime numbers? Yes. Say, according to you, right? Are they prime numbers? What I've written, favorable outcomes. That is 1, 2, 3, and 5. Are they prime numbers? Am I right? Okay. So this is the common mistake. No. This is the common mistake. 1. Remember your class 5. 1 is neither prime nor composite. Okay, so your prime numbers are 2, 3 and 5. Again 3, no problem. So 3 on 6, so again the answer is 1/2. बहुत बार हो जाता है कि ये लिस्ट आपकी गलत निकलती है, and by fluke you get this. Okay, so you get the answer as 1/2. So I hope it's clear to you. Then it could be same with odd number also, so I think you can make it out. Okay. Probability of getting at least 2 on the die. What is the probability that you get at least 2? Could you tell me? At least 2 का मतलब कल हमने ये डिस्कस किया था. So I hope it is clear to you that when at least 2 का मतलब क्या है? Yes? No? Wrong? Shreya? At least 2. तो याद है आपकी पॉकेट मनी है, आपके मार्क्स, ऐसे याद रख लो. रिमेम्बर, पॉकेट मनी मतलब क्या है? कम से कम स्पेंड करना है आपको. ओके, और आपके पास ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप कुछ भी खर्च किए बिना घर चले जाओगे तो मम्मी विल बी हैप्पी. और आपके मार्क्स जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ योर मार्क्स इज एटलीस्ट. ओके, तो एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो आना ही है. मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, सॉरी, it could be 2, it could be 3, it could be 4, it could be 5, it could be 6. That is 1, 2, 3, 4, 5. So at least 2 is 5 on 6. Yes, some of you could answer it correctly. It's right. Okay.
Got it? Yes? Okay. Now, what is the probability of getting at most 6? What is the probability of getting at most 6? आप सोचिए तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ. Okay. So, did you all get it? Probability of at most. I think one person is wrong and rest all are coming. At most 6 मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए? मतलब कम से कम क्या आना चाहिए? सिर्फ सारे छोटे नंबर का मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6. Right? So that is 6 on 6 and 6 on 6 आपका क्या होना है? Answer is 1. And similarly here, probability of less than 7. Yes, probability is less than 7. Less than 7 मतलब क्या? Again same 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 on 6. The answer is 1. देखिए ये सारी बहुत सारी ऐसी हैं मतलब the answer is same but it could be asked in a different way. I hope this is clear to you and you understand it better that how to write it and how to find the answer. So जो language है बस उस पे आपको ध्यान देना है. So I hope this is clear to you with such simple example. Okay? ऐसा नहीं है कि बहुत simple है तो एग्जाम में नहीं आता है. It comes इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है. So this is also one of the common examples which comes in the exam. Fine. So now we move on to a new point that is when we throw two dice. बहुत सारी गेम्स में आप दो डाइस रहते हैं, isn't it? The लूडो हुआ गया या बिजनेस गेम हो गया. We use two dice. जानिए आप कहाँ हो, कौन सा वाला आंसर 5/6 आ रहा है आपका? I think the answer is G, I expect. Okay. So let's move on. ओके और यहाँ पे पहले जो सिंपल चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है वो है आपका टोटल आउटकम्स. ओके आपके पास दो डाइस है और जो दो डाइस है तो एक पे कौन से नंबर 1 to 6 और दूसरे पे कौन से नंबर है 1 to 6. फाइन. तो सपोज मेरे फर्स्ट डाई मैंने थ्रो की, मैंने दोनों डाइस साथ में थ्रो की है और मेरे फर्स्ट में आ रहा है नंबर 1. तो मेरी सेकेंड डाई में ऑप्शन क्या होगा? तो सेकेंड डाई में क्या हो सकता है? इट कुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? So now my possibility of outcomes could be मेरा first die को मैं पहले and then second die. So first die पे 1 और second die पे भी 1 आया. First die पे 1 और second die पे 2. First die पे 1, second die पे 3. 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 है 5 और यहाँ पे 1 है. तो जब एक ही नंबर लिया राइट तो 1 के साथ ये सारी 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है. And the same way, okay, with the same way, if I say कि मेरे first die पे 2 आ गया तो यहाँ पे इसी तरीके से दूसरे 6 ऑप्शंस आ गए, isn't it? उसी तरीके से first die पे 3 आया तो फिर से ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. सेकेंड die पे ये सारे ऑप्शंस आ सकते हैं and so on. You get this as इस तरीके से आपके पास कितने ऑप्शंस आ रहे हैं? Just count it. By the time I write it down so that we can help with other sums and other questions also. So how many options are available to you? Yes. और इसका सबसे कॉमन डाउट एग्जाम में ये होता है कि मैम हम इतने आउटकम्स लिखने बैठेंगे तो हमारा आधा टाइम इसमें चला जाएगा. तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एग्जाम में ये पूरे 36 आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है. You just write 1, 2 and then put dash 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 and write 6, and yes उसके नीचे आपको लिख देने हैं टोटल आउटकम्स आर 36. yes आपने सही कहा है. 6, 3, 6, 4. ओके जस्ट इसको पहले नॉलेज में ले लेते हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लिया मैंने ये लिखने में. ओके तो टोटल आपको कितने मिल रहे हैं? यू वुड सी इसको भी लिख लेती हूँ मैं राइट. सो 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 and the last is 2, 6. Okay, so you could see this all total are how many? 36. तो इस 36 आउटकम्स में से हमारा आंसर कहीं से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं. तो वेरी कॉमन जो सबको देख के ही समझ में आ जाएगा. ओके, what is the probability that you get double?
what is the probability that you get doubles? Doubles का मतलब क्या हुआ? Same number on both the tiles. So could you see this? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. So what is the probability of double? Yes. What is the probability of doubles? It is 6 on 36. तो आपको cancellation करके क्या मिलेगा? 1 on 6. That is 1 upon 6. I hope it is clear. Yes. I think you got this. Okay. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए, क्योंकि ये लिखा है तो आई वोंट बी एबल टू राइट डाउन द क्वेश्चन. तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ. ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ. ओके, पे अटेंशन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what is the probability of getting at least one time 5? What is the probability of getting at least one time 5? On one of the die, at least you should, मतलब कम से कम एक die पे तो 5 होना ही चाहिए. So now आपकी possibility क्या है? तो 5 है कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे. इसके बाद मैं रब कर दूंगी so that I think you know get this. Yeah, one person is right, but others also please try to understand how it is. No, Ankita, या तो आंसर स्लो आया है or not for this. Okay, now pay attention here. Again, many of you know it very well. So 5 वाले numbers हैं 1 2 3 4 5 6. Okay, so I'll cut it down. Okay, ये. Okay, और यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ये. Okay, जनरली क्या होता है? Okay, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Many of you answered it also. But generally मैंने जैसे कहा वैसे तो okay, यहाँ 5 बार आता है, यहाँ 5 बार, यहाँ पे 6 times, यहाँ पे 6 times, तो 12 लेते हैं and they make mistake. Fine. So आपको जब आप ऐसे देख रहे हो, अब कितने मैंने कट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Is it 12 times? You remember? I hope you are getting it. What I'm saying? आप ये देखोगे कि ये जो 5 5 इसको 2 बार आ रहा है. So we count them once only. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. क्योंकि मैं already count कर चुकी हूँ. Yes, many of you are correct. So the answer is here 11 by 36. I hope it is clear. बहुत बार ये mistake होती है जिसमें भी 9 upon 36. आयुष थोड़ा सा ध्यान देना बेटा. I hope this is clear to you. Right? समझ में आ रहा है? This is clear to you. So these are the simplest examples जो आते हैं. अब थोड़ा सा ध्यान देना. Okay? The question is, okay? मैं question बोल रही हूँ. यही पे लिखती हूँ, शायद आपको दिखे तो अच्छा है. और आप सुन भी लीजिए ध्यान से. The sum, दो डाई कर रहे हैं आप, ऐड करते हैं ना, फिर आप मूव होते हैं. Probability of getting the sum as 10. Probability of sum on two die as 10. Come on. Sorry, round bracket. The sum of the two numbers should be 10. So sum 10 कैसे आएगा? Okay. इसको रब कर दूं. I think बहुत वो लग रहा है और स्पीड की बहुत यूज हो रही है. तो अब आप सोच सकते हैं, एक तो आपको सिंपल पता है कि 10 कैसे आता है. हाँ, 10 कैसे आता है सम में. ओके, तो आप कहोगे 5 + 5 10. 1 2 3 से मैं स्टार्ट करती हूँ. ओके, आई जस्ट गो लॉजिकली. सो 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 and 5 + 5. रिवर्स भी पॉसिबल है. ये मेरा 10 का नॉलेज कहता है, isn't it? बट अब मैं इसको कनेक्ट करती हूँ डाइस के साथ. तो डाइस में 5 होते हैं दोनों, 4 होता है, 6 होता है, 6 होता है, 4 होता है. Do I have this options with me? क्योंकि डाइस पे 7 नहीं होता है. So what are the options left with me? So my favorable outcome in this case is it could be 4, 6, it could be 6, 4, or it could be 5, 5. I hope this is clear to you. Yes. तो मेरे पास sum of
5 6 10 के लिए तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? सिर्फ 3. फाइन. और आउट ऑफ 36, तो इसको मैं कैंसिलेशन करके लिखूंगी तो आंसर क्या आ रहा है? 1 on 12. Okay, again you are wrong here, so be clear. 3 upon 36, so 1 on 12. I hope this is clear to all of you. समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं. So again, it's based on language. ठीक है ना? जो आपका क्वेश्चन है, this is all word problem. ठीक है? तो यदि उसको आपने ठीक से समझा और ठीक से उसको मैथमेटिकली डाला, then I don't think so there is an issue that you don't understand and you make mistakes. Okay? So shall I wind up or shall we go with one more question? Yes, I hope you are enjoying this chapter. Yes, one of the easiest chapter you have it. Okay, so I hope this is clear. Two types question, again it's one of the common question. जो मैंने कहा वो एक याद रख लेना है. फेवरेट आपके जो टोटल आउटकम्स है, तो जब आप बुक में सम सॉल्व करना शुरू करेंगे, ओके, तो वन टाइम यू राइट ऑल 36 आउटकम्स. बट याद रखिए एग्जाम में आपको सारे के सारे वो पूरा लिखने की टेबल लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट 1,1 1,2 dash 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 till 6,6 and that's all, and then write it down. Total outcomes is equal to 36. That's all. Fine. तो ये याद रख लेना आपको. एंड फिर क्वेश्चन के हिसाब से फिर फॉर्मूला लिख दीजिए. हमेशा पहले टोटल आउटकम, फिर नंबर ऑफ टोटल आउटकम, उसके बाद फॉर्मूला. ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन की पी ऑफ जो भी आपको पूछा है, फिर उसका फेवरेबल आउटकम एंड देन अगेन प्रोबेबिलिटी इज और उसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में. फाइन. इज क्लियर टू यू? सो वी डेल्ट विद द टाइप क्वेश्चंस. ओके, ये चैप्टर आपको सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. बहुत इजी भी है क्योंकि बहुत ज्यादा कोई बर्डन नहीं है कि कुछ लॉन्ग स्टेप्स कर दो. ठीक है. तो इसके बाद tomorrow will be the next class we will be dealing with the card question. Okay, उसके लिए पहले मैं एक ppt आपको शेयर करूंगी. So please go through it and try to understand it. Fine. So we wind up here and I hope you have understood it well. Thank you children. I'm sending you the link of attendance, so please fill it up. Thank you for attending the class. And हाँ, textbook exercise मैं आपको soft copy forward कर रही हूँ, so you can go through it and start solving the sum. No need to copy the question, but you write question on this problem.